powerful learners, welcome to a new video which is about Memorandum of Association, which is MOA. It is very useful information of company. So before moving on to the topic, do like, share and subscribe. So meaning, the Memorandum of Association is the constitution of a company. Constitution means it contains do's and don'ts, rights, duties, everything in that. Okay, and it is the charter of the company. Okay, it is a charter of the company. It provides the foundation on which the company construct is built. Okay, it is a foundation, it is a basic foundation on which the structure is built. It defines the scopes of company's activity as well as its relation with outside world. Okay, and the purpose of memorandum is to be enable the shareholders, creditors and those who deal with the company to know what the permitted range of activities of a entrepreneur. Okay, and this is the most important in the formation of company. Let's go further and let's see the perfect definition for memorandum of association. Okay, so here we have a definition. According to section 2 of 28 of the Companies Act, define a memorandum as the memorandum of association of a company as originally formed it and as uttered from time to time in precautions of any company laws of this act. Okay, this is defined by section 2 of 28 by Companies Act. The memorandum of association must be signed by at least 7 members in the case of private limited company. And it is a basic document for the company, so it should be prepared very carefully. So when we have a company, whether it may be private company or a public company, the rules, regulations, do's and don'ts are created by the members, the heads, the MDs. Okay, so when we create it, we should be very conscious about it and we should prepare it by all concern and advice with everyone. So it is a basic document of a company, so it should be prepared very carefully. And the content of memorandum of association is known as clause are explained in the section B of this act. Let us see the clause of memorandum of association. So memorandum of association में आता है name clause, registered office clause, situation clause, objective clause, liability clause, capital clause, association clause. अब देखते हैं नेम क्लॉज में क्या आता है. A company being a separate legal entity must have a name. नेम इसलिए होना क्या, ताकि वो आइडेंटिफाई हो कि वो कंपनी है. And a company must select any name which does not resemble the name of any other company. मतलब एग्जाम्पल वी हैव अ कोकोकोला कंपनी. अब कोई और कंपनी सेटअप हो रही है तो वो कोकोकोला कंपनी का नाम नहीं ले सकती है. ओके, वो रजिस्टर्ड होता है ऑलरेडी. You cannot select any others company name, and the company should not contain the words like king, queen and any other name like government bodies. King and queen include नहीं होना चाहिए कंपनी के नाम में. and कोई government bodies like कोई government employee का नाम नहीं होना चाहिए. वो like I can't say someone names, but सेंट्रल गवर्नमेंट या असेंबली मेंबर्स, किसी का भी नाम इंक्लूड नहीं होना चाहिए बस. ओके, एंड द प्रपोज नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्बल्स एंड नेम्स एक्ट 1950. ऑब्जेक्टेबल नहीं होना चाहिए वो प्रोविजंस ऑफ एम्बल्स एंड नेम्स एक्ट 1950 के तहत. ओके, एंड लिमिटेड होना चाहिए पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड. मे बी आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड LTD. प्राइवेट लिमिटेड होता है कंपनी के नाम के लास्ट में.
ओके। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज, ये क्या है, वो एक ऐसा क्लॉज है जो स्टेट करता प्लेस एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे कंपनी है वहाँ का प्लेस, वहाँ का एड्रेस पूरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए कंपनी के। एंड इट हेल्प्स टू हैव अ करस्पॉन्डेंट विद द कंपनी, जो एक रिलेशन बन जाता है वो कंपनी और रजिस्टर्ड ऑफिस के बीच में। एंड इफ द प्लेस डज नॉट डिसाइड एट द टाइम ऑफ इनकोऑपरेशन, इट कैन बी intimated to the registered within 13 days from the date of incorporation or commencement of business which was is earlier। मतलब अगर कोई टाइम या प्लेस डिसाइड नहीं होती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए कंपनी, तो आप जब रजिस्टर कराते हो ना कंपनी, तब से लेके आपको 1 महीने का टाइम मिलता है जिसमें आप प्लेस और एड्रेस रजिस्ट्रार को दे सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट, उसके बगैर कंपनी स्टार्ट नहीं होती। And objective clause, this clause defines the sphere of activities of a company. It also determines the power of a company। मतलब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, पावर्स क्या है कंपनी के वो डिफाइंड होते हैं। एंड इट कंसिडर्ड एज अ कोर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकॉज इट सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड। मतलब ऑब्जेक्टिव होता है ना, लाइक कोका कोला कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ड्रिंक्स बनाना, कूल ड्रिंक्स, ओके, वो डिफाइन कर दिए। एंड द मेन क्लॉज कंटेंट इज मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव। दिस कॉज offers protection to shareholders and creditors by ensuring that the fund is not going to be risked, okay। And let's see liability clause। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या आता है देखते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, दिस क्लॉज कंटेन द नेचर ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब नेचर ऑफ इट्स मेंबर्स, लाइक थोड़े मेंबर्स की ना कुछ स्पेशलिटी होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं वो कोई चीज़ों में, वो कंटेंट करता है। एंड इट स्टेट्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितना वो शेयर लिया उन लोगों की वैल्यू उतनी ही है। एंड इट मीन्स दैट द ओनली मेंबर आर लाइबल टू पे ओनली द अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर आर नॉट फर्दर एल्स, ओके। कैपिटल क्लॉज में देखते हैं, दिस क्लॉज कंटेंट द कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure means the total structure. Capital means the money which is invested in the business, okay। And capital structure of a company, the division of company into equity shares, preference shares, and the number of shares in each category, and their value should be given। It also mentions that any type of shareholders have some special rights and privileges, okay। ये हो गया कैपिटल क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज देख लेते हैं। द क्लॉज कंटेंट द नेम एंड सिग्नेचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द फुल एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड विटनेस आर ऑल्सो गिवन। मतलब ये क्लॉज क्या कंटेंट करता है, नेम एंड सिग्नेचर्स, सब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है विद देयर नेम एंड सिग्नेचर्स, वो इंक्लूड होता है। एंड देयर फुल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस, वेल दे आर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। वो लोग का सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उन लोगों का ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी होता है फुल एड्रेस के साथ। एंड विद विटनेस, ओके। एंड सब्सक्राइबर्स डिक्लेयर दैट दे आर अग्री टू incorporate the company and agree to take the shares against their name। सो ये रहे आपके क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। लेट्स रीकैप इट अगेन, देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। हैव अ व्यू एट दिस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, एंड इट इज़ चार्टर ऑफ कंपनी, एंड ये एक फाउंडेशन है कंपनी का जिस पे कंपनी बिल्ड होती है। इस पे डू एंड डोंट्स, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ इंक्लूड होते हैं। एंड डेफिनेशन में आता है सेक्शन 2 of 28 of Companies Act define a memorandum as the
Memorandum of Association of Company as originally formed it or as altered from time to time in proportions of any company law of this act. Memorandum of Association must be signed by at least 7 members in case of private company, and it is a basic document of any company and should be prepared by केयरफुलनेस एंड सबकी एडवाइस लेके प्रिपेयर करें ना तो सबसे बेस्ट रहेगा ये. ओके, क्लॉजेस देख लेते हैं. नेम क्लॉज, नेम शुड बी रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफ प्लेस टाइम विद इन 30 days. ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का. लाइबिलिटी क्लॉज, वैल्यू ऑफ शेयर्स. कैपिटल क्लॉज है मतलब कैपिटल किस चीज़ों में, कितनी चीज़ों में डिवाइड हो रहा है. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कैटेगरी एंड देयर वैल्यू. ओके, एसोसिएशन क्लॉज में आता है नेम एंड सिग्नेचर के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहना इसमें, एंड विथ फुल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड विद विटनेस और ऑल्सो गिवन इन एसोसिएशन क्लॉज. So here were the view of MOM association, memorandum of association, meaning, definition and clauses. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.